why civil services? So when I was preparing, I was never a in my school days, जब मैं school में था, I passed out from APJ school Noida. So when I was preparing, I was never a topper student or a meritorious student. I was, you can at best say I was a above average student. Like 70% I used to get, 80% I used to get. I got 85% in my board exams, but I was never those students who were really into studies, which really affected my performance when I was preparing the civil service examination. I'll come to that aspect later. Now, why civil services? You should choose it as a career option. Those students, who feel that, they want to bring about some change in the society. So this is one of the methods. I would say this is one of the methods by which you can bring in positive change in the society. Because civil servants are expected to be policy makers and also policy executors. But what does this mean, policy makers and policy executors? How the governance system should function. Governance system की हमारे 3 aspects होते हैं. One is the legislature, the body which make the laws of the country. Executive, which implements the laws. And third is the judiciary, which is in the business of adjudication, which solves the dispute between 2 parties. So आप civil servants के अंदर twin role करते हैं. What is this twin role? You go and become the policy maker as well as the policy implementers. जब आप अपना करियर शुरू करते हैं, तो करियर आप सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट SDM से शुरू करते हैं, सिविल सर्वेंट, जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने तहसील में, in the district and in the subdivision, they implement the policies of the government. For example, in the times of COVID, you can see the vaccination drives आजकल चली हुई हैं. So who coordinates all the servants involved of vaccination camps in the real life examples? Jan Dhan Yojana, which is for opening bank accounts. So like these government schemes are implemented at the district level by these officials. But लोग ऐसा भी कहते हैं कि मतलब this exam is one of the toughest examinations. So that is why I say, it's an attractive and challenging career for the ambitious, aspiring and the talented. This career option offers you diversity of work. What does this mean? अब मैं diversity of work तो बोलता हूँ, but इसका मतलब क्या है? Diversity of work says that as a district magistrate, I may be involved in maintaining law and order in the district. अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके जिले में अगर कोई ऐसी समस्या आ गई, तो you are expected to solve it and maintain law and order. But at the same time आप developmental work भी कर रहे होते हैं, आप रूरल रोड्स भी बना रहे होते हैं, आप सिविक एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे होते हैं, फ्रॉम सैनिटेशन, फ्रॉम बिल्डिंग bylaws giving clearances to maintaining law and order, disaster management. So there are a number of works that a district magistrate or a civil servant performs. So आपको कई सारे फॉर्म्स मिलते हैं, कई सारे आपको काम करने के तरीके मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स. और इसके साथ साथ आपको पब्लिक से इंटरेक्ट करने का भी मौका मिलता है, पब्लिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका मिलता है. तो जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, व्हेन यू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, तो आप यू ब्रिंग अबाउट गुड चेंज इन द सोसाइटी. आप किसी की प्रॉब्लम, जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स अपनी रियल लाइफ में फेस कर रहे हैं, उसकी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको सॉल्व करने की. सो दैट इज व्हाई आई कम, दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री. और जब आप सीनियर हो जाते हैं सिविल सर्विसेज में, तब आपको एक मौका मिलता है, यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट योर ओन कंट्री ऑन इंटरनेशनल फोरम. यूएन में जाने का, हमारे यहाँ एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज हैं जो कि वेरियस कंट्रीज में आप एम्बेसडर्स, कॉन्सुलेट जनरल्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ योर कंट्री बनकर जाते हैं. सो आपको कितनी बड़ी एक वाइड स्पेक्ट्रम मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कंट्री के लिए काम करने के लिए, सोसाइटी के लिए काम करने के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए. अब मैं आपको जस्ट बहुत ब्रीफ में, बिकॉज यू आर इन योर स्कूल, तो मैं आपको जस्ट एक बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द स्कीम ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. Now this exam is given after you clear your graduation, and you can start your preparation in the graduation. But once you clear your graduation, then you are able to give this examination. So this exam has 3 stages. One is the prelim stage, second is the main stage, and third is the interview stage.
Now, preliminary exam consists of 2 papers, general studies and one aptitude test. When lakhs of aspirants apply this exam, so they are on the stage 1. Out of that, after giving these 2 examinations, they go on to the mains examination. Now, mains examination is a written examination, जिसमें आपको लिखने पड़ते हैं आंसर्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, और ये इतने डाइवर्स, इतने डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, फ्रॉम जनरल नॉलेज, फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, तो इन सब एंड सोशल सब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो मेंस एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए. सो 9 पेपर्स यू हैव टू क्लियर इन मेंस. सो जो बच्चे, जो दोज एस्पिरेंट्स, दोज कैंडिडेट्स हु क्लियर द मेंस एग्जामिनेशन, दे आर कॉल्ड फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट, which is also known as interview. After the interview, the marks of the mains examination and the interview are combined and a final merit list is prepared. And on the basis of final merit list, ये सारी सर्विसेज जो कि अब नई नेक्स्ट स्लाइड में आएंगी, वो सर्विसेज आपको अलॉट करी जाती. These are the 9 papers. As you can see, paper A is the Indian language, which is only a qualifying subject. Paper B is the English, that is also qualifying. Paper 1, essay. You have to write an essay also in this examination. Paper 2 is general studies, which is common for all, which includes Indian heritage, culture, history, geography of the world and society. General studies 2, which includes governance, constitution of India, polity, social justice and international relations. And likewise, you can see in general paper number 4, general studies 3, you have technology, economic development, biodiversity, environmental security and disaster management. And general studies 4, ethics, integrity and aptitude. And paper 6th and 7th gives you an optional to choose where you specialize in. Now let's say that you can choose geography also, you can choose history also, you can choose engineering also, you can choose medical also, you can choose management, public administration. Likewise, there are a list of, I think, around 24 subjects from which you can choose your optional 1 and optional 2. You can see the marks also. So the final merit list is prepared out of 2025 marks. See, I told you that this is a little boring part, so I will come to the interesting part afterwards. मैं आप सब लोगों के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां और किस्से लेकर आया हूं. So services under, once आपने देखा कि once the final merit is prepared out of this examination, so these are the services which you see on your screen are given to you. You can see Indian Administrative Services, Indian Foreign Service, Indian Police Service, Indian Revenue Service, Income Tax and Customs, Indian Railways, Indian Audit and Accounts, Indian Civil Accounts. So these are a list of 23 to 24 services which are offered to you. And आप जब आप अपना मेंस का एग्जाम भर रहे होते हैं, तो in that form आप अपनी प्रेफरेंस भी भर सकते हैं. Like you give Indian Administrative Services as rank position number 1, then IFS 2, IPS 3. So by this you give your preference, and if you get a good rank, if you get your good rank in the final merit list, you are allotted the service according to your preference. Like you can see in the 5th point, I belong to Delhi, Andaman and Nicobar Islands Civil Service. In the last point, you can see. So what is the right time to prepare for this civil services? I would say as early as possible, because it is not about giving this examination, it is about developing a personality. Now, generally the exam, syllabus needs about 18 months for completion, and every year lakhs of students appear for civil services examination, and only 75 to 900 candidates based on vacancy are selected in this examination. Now, what I would like you to do is, if you think that you will be aspiring to become a civil servant, if you have to be really early in this game of knowledge and its application, a candidate should start preparing the basics as well as reading the NCERTs as here. Okay.
So now what I'll do is I'll skip this. And what is the right technique? That if you want to be a civil servant, you have to build the right attitude. I'll share a very interesting story about myself when I was not able to clear this examination for the 2 attempts, and I cleared it in the 3rd attempt. So you see the first point which says building the right attitude, which includes patience, consistency, and dedication. Now, what should be your strategy? The strategy is that you must go through the NCERTs or school books thoroughly, because you build the foundation of your preparation. When I say foundation, what does this foundation means? Why am I asking you to that you must go through the NCERT books or school books? The reason is that in a building, the most important building block is the foundation stone. If the foundation is strong, you will be able to build a big building. So when it comes to knowledge, what is your foundation? Your school years, the effort that you've made in your school, the books that you've studied, the NCERT, these are your foundation. On this knowledge, on this basic knowledge, you will build the foundation of your personality, which I want you to do it with dedication. What is the most important thing which I realized afterwards, after spending 2 years into this preparation and I was not able to clear? One thing I realized is that everything you need a conceptual clarity. कॉन्सेप्ट की ना एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैंने ये पढ़ा है तो इसमें मेरे थॉट्स and what the book is saying should be the same. We should be on the same page with the book or the chapter that we are reading and we are trying to understand. Learning is the key. And through this, I realized that the trick is to enjoy this whole process of learning. I'll come to this when I'll share my insights. I'll come to share my experiences with you. So this is the end of the slide. Thank you so much. Now this is the boring part which has ended. ये boring part था जो कि अब खत्म हो गया. I'll stop sharing. Madam, is my voice clear? Hello. Yes. Okay. Okay, it's clear. Yes. So students, ये तो था बहुत structured part जिसके बारे में मैंने आपको बताया that this is about civil services. What is the right time to prepare? Why civil services? What do you get to do and how to do it? But for now, I want to share some interesting stories with you. So what happened was, I was not a meritorious student. I was never a topper. Always हल्का सा थोड़ा सा पीछे हैं, but if they make the right effort, they'll reach the top. So for you students, I have come with very interesting stories. So I started my preparation after my engineering. I did my electrical engineering. 12th के बाद, after choosing science subjects, I chose engineering. Engineering करने के लिए मैंने यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग पास करी. उसके बाद माय फादर मोटिवेटेड मी टू अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज कि बेटा आप आईएएस की तैयारी करो. तो मैंने आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माय फॉर माय एग्जाम. आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर्स. I started reading through magazines. I did my coaching. I did everything. But one thing which I did not do was work upon myself, which is the real message today that I want to convey to you. That what is it that is required to achieve excellence? Is it that you study for so many number of hours? Is it that you read so many books that only studies you should do? No. The message that I want to put across is that you start working upon yourself. Now, what does this mean? In my first attempt, जब मैंने पहला attempt दिया, मैंने सब newspapers, I read the newspapers, मैंने सब चीज़ तैयारी अच्छे से कर ली, but मैं right attitude नहीं बना पाया. Now, what is this right attitude? And what was the result? The result was I was not able to clear the first stage of the examination, that is the prelims stage, which I showed you in the slide. अब stages हैं 3. मैं पहली स्टेज ही नहीं क्लियर कर पाया. सो आई आस्क्ड माय सेल्फ, जब आप पहली स्टेज ही नहीं क्लियर कर पाओगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? हाउ विल यू क्लियर दिस नेशनल लेवल एग्जामिनेशन? सो देन आई रेड सम बुक्स which work on personality development, which says that instead you go back to the basics, that see and analyze and think about your personalities, think about your likes and dislikes. Think about what do you fear? आपको डर किस चीज से लगता है?
ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. And then I started working upon myself. I said, let me go back to school. मैं स्कूल के पास जाता हूँ और स्कूल में क्या पढ़ाया था उसको दोबारा से पढ़ता. बिकॉज दैट वाज द अजम्पशन मैंने बना रखी थी कि नहीं वो तो मैंने पढ़ रखा है तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसके बाद तो बस मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ूंगा, अपना सब्जेक्ट पढ़ूंगा और मैं क्लियर कर जाऊंगा. दैट वाज नॉट द केस. जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो अब आता है रोल के अंदर. नाउ व्हाट डज दिस मीन? मैं आई वेंट बैक टू स्कूल, आई पिक्ड अप क्लास 6 की किताब. You won't imagine this, but when I was 23 years old, I went back to school. I asked that what are the current books that are being made to study. So class 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, I went back to the foundation. मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया और उसको अब्सॉर्ब करना स्टार्ट किया, उसको इंटरनलाइज करना स्टार्ट किया. Before reading anything else, I want my foundation to be strong. और इसमें कुछ considerable 2 months मेरे लगे. But after that 2 months, I realized that I instinctively मेरे को दिख गया that what was missing, क्या missing piece था in my preparation. And you won't imagine that after building the foundation and then preparing for this examination, I cleared the first stage of the examination. But in that same year, in my second attempt, I was not able to clear the mains examination by only 3 marks. सिर्फ 3 नंबर से मैं रह गया सेकंड अटेम्प्ट. बट आई डिड नॉट लूज हार्ट. मैंने बोला ओके फाइन, एटलीस्ट समथिंग इज गोइंग राइट, कुछ तो सही चल रहा होगा कि मैं इस स्टेज तक तो आ गया हूँ. और मैं इतना पढ़ाई में इतना स्कूल में अच्छा नहीं था, तो मैंने बोला ओके समथिंग इज गोइंग राइट, एटलीस्ट आई एम इन द राइट डायरेक्शन. सो दिस डायरेक्शन वाज रिक्वायर्ड, बट अ चेंज इन स्ट्रेटेजी फर्दर, जिसको आप कहते हैं कि प्रीलिम्स तो आपने निकाल लिया, मेंस आप कैसे निकालोगे? मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग आंसर्स. आपने पढ़ लिया, आपने नॉलेज अब्सॉर्ब कर ली, यू गॉट द नॉलेज, नाउ हाउ टू रिप्रोड्यूस दैट, how to write it in a way that the examiner feels yes, the person has written it correctly and to the satisfaction of the question. जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा ही फोकस की तरह आपने आंसर लिख दिया. So then I started writing answer practice. I don't know अब अगर होता है कि नहीं होता है, I don't know about I would ask the teacher if Miss Chetna Jindal or Miss Nidhi Aneja would tell me. हमारे टाइम in my school time in 2003 or 4, we used to get extra answer sheets for writing the answer. Do we get it now still? If the main answer sheet has finished in the question paper, do we get extra supplementary answer sheets for writing answers? Yes sir, we do get it. We do get it. Okay, so I'll share one interesting aspect what happened in the examination in my third attempt. जब second attempt में मेरा नहीं हुआ ना, तो जो मेरे साथ बैठा हुआ था, one who was sitting right next to me, he got selected. And I asked to myself that how come this person got the selection and I was not able to get the selection. So one thing I realized in the examination that he was keep on answering lengthy answers, and he used to write for and used to take supplementary sheets, supplementary sheet 1, supplementary sheet 2, supplementary sheet 3, and used to and he took almost 5 sheets for one paper. So I thought, what a brilliant strategy. So I did nothing, but I just copied him in the next attempt. And I also, in the third attempt, I took to the invigilator and I asked him, sir, supplementary sheet dijiye mujhe. Sheet, sir, sheet. Sheet pe sheet bharte gaye. And that's how I cleared this examination. But that was on a lighter note. But the point that I want to, convey today is that I read a book which, mentioned, and it's by Robin Sharma. If you get time, so you can also go through it, which talks about, personal mastery. So what did I do was I worked upon myself, not on, intensifying my studies. That will be a byproduct. But you work upon yourself so that you imbibe the values of commitment, dedication, and conviction to the vision that you have set upon yourself. That is what I want to convey to you. Now, जब result आ गया third attempt में, जब when I got through this examination,
So I was first posting was SDM हौस खास. आप जानते हैं दिल्ली में एक जगह है हौस खास. So I want to share one small story with you all. कि how this career gives you satisfaction. When you solve people's problem, जब आप लोगों की समस्या solve करते हैं. So first posting लग गई SDM हौस खास की. I was very elated. I was thrilled that I will be going to the South District and solving people's problems. So a lot of people come to SDM office and district magistrate's office with a lot of queries. So not all of them are genuine, and not everything is not genuine. But I came across one paper, and it was beautifully written in a beautiful handwriting by a girl named Aditi, and she was staying in Madangir, and the writing was so good. इतनी अच्छी writing में उसने मेरे को अपनी application लिखी थी, and explaining her problem कि सर मेरे घर में, now listen to this problem, कि सर मैं जिस घर में रहती हूँ, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, एंड उसमें मेरे कुछ और रिलेटिव्स भी रहते हैं, और उन रिलेटिव्स ने मेरे घर की ना लाइट कटवा दी है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कटवा दिया है, और मैं बिजली विभाग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास गई, लेकिन उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया. बोला कि जब भी हम आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का तार जोड़ने आते हैं, आपके रिलेटिव्स हमें थोड़ा डरा के भगा देते. तो मैं सर आपके पास आई हूँ सो दैट आप मेरी हेल्प कर सकें. सो आई थॉट, आई मीन बिल्कुल जेन्युइन बात है कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में, तो दिल्ली एज एंड की इलेक्ट्रिसिटी ना हो किसी के घर में. तो मैंने आई आस्क्ड हर, आपकी इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है, आप मतलब बहुत अच्छा पढ़, तो बता रही, एंड तो शी टोल्ड मी दैट सर माय एम इज टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज. सो मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड मैंने फिर क्या किया, आई टुक दैट एप्लीकेशन एंड आई फॉर्म्ड अ टीम. अब अगर बिजली डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग, इफ दे आर नॉट एबल टू गेट दैट कनेक्शन डन, सो दे नीड सिक्योरिटी. सो आई कॉल्ड द एसीपी ऑफ द एरिया. आई सेड ऐसे ऐसे सर, दिस इज द इशू दैट वी नीड टू फाइंड टीम. I'll send somebody from my office, I'll send somebody from electricity department, and I'll send somebody from the MCD, and let's form a team, and we'll offer police security, and with that security we'll send the team to the location, and we'll see that how come the electricity connection is not restored. आप मानेंगे नहीं, and that day within 1 hour that electricity connection was restored, and she thanked me for this work, and I told her, this is our job, that electricity everybody needs, and she said I required it because it was getting very difficult for me to study, right? Like, no, but it gives you an opportunity. So this job gives you an opportunity to solve people's problems. Now it gives you an opportunity to solve social problems also, to somehow address the social problems. Like in my subdivision, I got some information, I received some information that, sir, there is a market in your area where child labor is persisting. A lot of children from rural areas of various states have come, and they are working in the shops, in sweet shops, on vegetable vendors, and they are made to sit and they are made to work. So in that case also, I told them, let's form a plan. Let's form a plan so that we execute. We choose a day so that the information is not leaked. We again formed a team of various departments and police, and conducted a surprise inspection. And you won't imagine that we rescued in 2015 25 children from that market area. 25 from the we restored them and rehabilitated them, and 25 children were rescued. We ensured that these children reached their parents, and also ensured that they got their wages for the number of months from which they have worked. So these are the two examples which और ये दो कहानियां मैं आपके सामने इसलिए शेयर करना चाह रहा था कि एक तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और अपने एरिया में अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी समस्या आ रही है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस service gives you that opportunity. Now another interesting story, अगर मैं आपके सामने थोड़ा सा पर्सनल डेवलपमेंट पे शेयर करना चाहूँगा, on a personal note, that
in the past, when I was preparing for this webinar, I thought that I'll share, some interesting stories on personal development and attitude. So एक story अगर आपने पता नहीं सुनी है कि नहीं सुनी है, सचिन तेंदुलकर की आज एक story सुनाता हूँ मैं आप सबको. So Sachin Tendulkar, he was, when he started his career, he was 15 and a half and he started playing test matches. और एक टेस्ट मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ था, पाकिस्तान के अंदर खेल रहे थे, एंड नवजोत सिंह सिद्धू वाज ऑन द अदर एंड. नवजोत सिंह सिद्धू एंड हमारा डे 5th था ऑफ द टेस्ट मैच, 5वें दिन टेस्ट मैच में, जबकि स्कोर था 22 for 4 एंड 22 for 4 पर सचिन तेंदुलकर 15.5 साल 16 साल के लड़के आते हैं पिच पर बैटिंग करने के लिए विद सच रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड नवजोत सिंह सिद्धू इन हिज आर्टिकल, and I saw this video on YouTube, you can go on and check this on, it's a Gaurav Sharma video on Sachin Tendulkar, which I really liked. I liked so that I can share with you all. तो सचिन तेंदुलकर आते हैं एंड बोलते हैं कि सर मैं आई एम रेडी टू प्ले. तो बोलता है देख के खेलना, बिकॉज द पाकिस्तान टीम मेंबर्स हैव वकार यूनिस, इमरान खान, आकिब जावेद, who were really good fast bowlers. आपकी 150 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर पर आवर पर आप जो है बॉलिंग कर रहे हैं, एंड ये 15.5-16 साल के लड़के क्रिकेट पिच पर आ गए हैं. पिच टूटी हुई है, 5वें दिन पिच टूट जाती है. नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं आज तो पता नहीं क्या होगा, 22 पर 4 हैं, और पहली बॉल जो इमरान खान बोल करते हैं और बैटिंग करने की कोशिश करते हैं, बट उनके साइड से निकल जाती है. कोशिश करते हैं, बोले नहीं थोड़ा संभल के खेलना, नवजोत सिंह सिद्धू उनसे कहते हैं. सेकंड टाइम जब सेकंड बॉल आती है इमरान खान की, एंड टिप्पा खाती है, एंड देन वो पुल करने की कोशिश करते हैं, बट पुल कर नहीं पाते, और उनकी बॉल सीधा उनके हेलमेट और उसके कैप के बीच में से निकल के उनकी नाक पे लग जाती है. दिस इमेजिन 16-year-old 150 किलोमीटर पर आवर, वो एकदम पुल करने के चक्कर में जमीन पर गिर जाते हैं. तो उस टाइम पे फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, बुलाए जाते हैं. तो उस जमाने में, दिस इज अबाउट 1989 में, दो ही चीजें उस टाइम पे थी, सैरिडॉन, और सैरिडॉन आपको पेन किलर खिला देते थे, और आइस बॉक्स होता, आइस लगा देते थे और पट्टी कर देते थे. तो वो नीचे गिरा हुआ है लड़का, 16-year-old, फेसिंग द बेस्ट बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड. एक आवाज सुनाई देती है नवजोत सिंह सिद्धू को. सचिन तेंदुलकर उठ के कहते हैं मैं खेलेगा. ही सेज मैं खेलेगा. डिस्पाइट ऑल ऑड्स, डिस्पाइट उनके इतना खून निकला है कि शर्ट पे पूरा उनकी शर्ट जो है पे खून लग गया है, नाक टूट गई है, बट ही सेज विद हिज कन्विक्शन, विद हिज डेडिकेशन, विद हिज कमिटमेंट टू दैट विजन कि मैं खेलेगा. उस टाइम पे नवजोत सिंह सिद्धू को लग गया कि ये ही विल बी द बिगेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट. तो ये स्टोरी सचिन तेंदुलकर की थी, which I want you to be to inspire you to reach the best potential. आप अपना पोटेंशियल कैसे रीच कर सकते हैं इस स्टोरी से. एंड कभी भी अपने अपने आप को कोई भी सिचुएशन में हो, सो जस्ट गो थ्रू विद द कन्विक्शन दैट आई डू इट, आई विल डू इट. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं भी इतना अच्छा स्कूल में पढ़ाई में नहीं कर पा रहा था, तो मैंने अपनी पर्सनालिटी पे काम करना शुरू करा. तो आपको भी क्या करना है, यू हैव टू वर्क अपॉन योर पर्सनालिटी, डेवलप दैट इनसाइट्स. और ये बहुत छोटे छोटे कदम उठाने हैं. यू हैव टू हैव वेरी स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स. तो व्हेन यू मेक स्मॉल एंड इंक्रीमेंटल स्टेप्स, तो जब ये बहुत 5-6 months में जब ये छोटे छोटे स्टेप ऐड हो जाते हैं, then you are able to see that big difference in your personality. So with these words, I think I've spoken enough, and I'm sure that this was interesting to you all.